आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉची थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। कॉची थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जैसे कॉची फॉर्मूला बोलते हैं तो इसे जनरल केस के लिए कॉची फॉर्मूला लिखेंगे, बट हियर वी राइट डाउन एज कॉची थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। द स्टेटमेंट ऑफ दिस लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक on and inside a closed contour C and zeta be any point inside C, so then the derivative f dash of zeta is equal to 1 upon 2 pi I along a curve C fz dz upon z minus zeta to the whole square. Now, अब इसका प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए we have definition of derivative f dash zeta। इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ जीटा प्लस h माइनस f ऑफ जीटा अपॉन h। ओके। नाउ अगर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम देखते हैं तो हम लिखते हैं z minus zeta which is less than delta implies that f of z minus f of zeta less than epsilon। और यहाँ पर क्या है? z minus zeta is equal to r। So z zeta which is the inside the circle C, r be the radius of that circle। now ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हमने लिख दिया, तो वी हैव वी नो दैट। अब इससे पहले हमने प्रूव किया था जो वैल्यू है एफ ऑफ जीटा, जीटा भी एनी पॉइंट विच लाई इनसाइड द सर्कल सी, so f of theta which is equal to 1 upon 2 pi iota integration along a curve C fz into dz upon z minus zeta। now इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, so we can write down that from equation number 1। so equation 1 से LHS part we write down as it is, so f dash of zeta is equal to limit h tends to 0। first we put the value of f जीटा प्लस एच, तो 1/h भी हमने बाहर रख लिया, 1/h। नाउ अब जीटा प्लस एच, तो इसमें फॉर्मूले में रिप्लेस जीटा बाई जीटा प्लस एच। तो जीटा रिप्लेस बाई जीटा प्लस एच, तो वी कैन राइट डाउन दिस एज 2 पाई आयोटा along with curve C एफ जेड और टू डी जेड अपॉन जेड माइनस, अब जीटा रिप्लेस बाई जीटा प्लस एच, तो ये जीटा माइनस एच माइनस, अब सेकंड एफ जीटा वैल्यू we write down as 1 upon 2 pi iota integration along with curve C एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जीटा। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so we write down as limit h tends to 0 1 upon h into, अब दोनों से we can take 1 upon 2 pi I as common, so this can be written as we write down in the same integration। तो सेम इंटीग्रेशन में अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं?
1/z माइनस जीटा माइनस एच, और यहाँ से माइनस 1/z माइनस जीटा और into fz dz. So we write down this. Now, next we write down limit h tends to 0, 1/h. So this will be 1/2 pi iota along a curve C. अब इसमें से we can take LCM. अब LCM क्या आ जाएगा हमारा, पूरा कंप्लीट LCM ले लेते हैं. z माइनस जीटा माइनस एच और z माइनस जीटा. तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, z माइनस जीटा माइनस, और माइनस का z हो जाएगा, प्लस का जीटा हो जाएगा और प्लस का h. तो ये हो जाएगा कंप्लीट, और दिस इनटू एफ जेड और डी जेड. तो यहाँ पे जेड टू जेड कैंसिल हो जाएगा, जीटा टू जीटा कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा केवल h. तो नेक्स्ट स्टेप वी राइट डाउन लिमिट h टेंस टू 0, 1/h into 1/2 pi iota along a curve C, तो h upon z माइनस जीटा माइनस h और z माइनस जीटा और इंटू एफ जेड डी जेड. अब h क्या होगा, h कांस्टेंट होगा, h कांस्टेंट होगा, सो वी कैन टेक h आउटसाइड या डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं इस h से. तो यहाँ से हमने h से h कैंसिल कर दिया. सो नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट डाउन द लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 1/z माइनस जीटा माइनस h और z माइनस जीटा और इंटू एफ जेड डी जेड. When we apply limit z h tends to 0, so apply h tends to 0, so this gives us 2 pi iota along a curve C, तो 1/z minus zeta, h tends to 0 apply करेंगे तो z minus zeta और into f z dz. So now this can be written as, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड थी f dash zeta, f dash zeta is equal to 1/2 pi I along a curve C, 1/z minus zeta to the whole square or into fz dz. So we can write down that f dash zeta is equal to 1/2 pi iota along the curve C. So fz dz upon z minus zeta to the whole square. So this is the proof of formula Cauchy theorem for derivative, first derivative के लिए. Okay, so you understand the proof.